Hello everyone, welcome to my channel. My name is Samiksha, and if you are new to my channel, I make informative videos on academic and professional development. And if you find my videos informative, if you like them, please do not forget to like, share and subscribe. In today's video, I am going to talk about purchasing power parity and why is this a very important factor if you are looking to relocate for a job from India to Germany. So to start with, purchasing power parity, also abbreviated as PPP, is basically indicates how many units of currency have to be paid for a specific volume of goods and services in two different countries and convert it into a uniform currency so that the two countries can become comparable internationally. So, for example, India and Germany have very different economic standards, and it is very important to calculate the purchasing power parity to identify what is the relative cost of living and the salaries in both countries. So it might appear from India that the salaries in Germany are very high, but this is also because the cost of living in Germany is very high. And recent data suggests that India generally has a lower PPP, adjusted GDP per capita, compared to Germany, and this indicates that on an average the goods and services in India are considerably more cheaper than Germany. Obviously, this does not mean that every good and service in India is cheaper than in Germany, and this is the reason why purchasing power parity is a very important factor to consider when you relocate, especially for jobs when you relocate from one country to another. And this is not only for India and Germany. I'm saying that because I focus on making videos in between these two countries and I have the experience. But of course, if you are relocating from one country to another, it is very important to check this particular factor. Now let's come a little bit to numbers. Now today, €1 is 88 Indian rupees. Before deductions, if my earning is €50,000 per annum, then you convert it directly into INR. You will notice that it appears 44 lakh Indian rupees annually. But if you calculate the purchasing power parity, so there are calculators online with which you can do so, but there is also a formula. If you are an economic student, you might know this, that you can directly manually calculate the purchasing power parity between the two countries, and this tells me that you require a salary of 16 lakhs 47,000 Indian rupees to live a similar quality of life as you would with a salary of €50,000 in Germany's local currency. Clearly meaning that if you are currently working in India with a salary of 16 lakh per annum and have been offered a salary of €50,000 per annum in Germany, then in terms of pay, both the amounts are similar. Now what you therefore need to consider now is that the pay that you are getting is the same. Now the other factors come into play, as in the cost of living. What are the factors that are more important to you for your life? Let's take Munich. Munich is one of the most expensive cities. It's similar to Mumbai in India, right? So Munich has, if you are renting a room in a shared apartment, it will cost you anywhere between €500 to €700 in the city. While a furnished studio apartment, जो basically one room kitchen बोलते हैं मुंबई में, will cost you approximately 1,100 to 1,300 euros. If you talk about meals, then if you are eating outside, it's very common to spend 10 to 15 euros per meal. And if you're cooking at home is generally much cheaper. But if you're buying groceries very often, every week you're buying groceries अच्छा खुला, like you're buying vegetables, you are buying fruits, you are spending properly. It's not like you are doing some kanjusi in buying groceries. Then you can expect to spend 20 to 25 euros a week, which comes approximately 150 euros every month. तो कितना हो गया total cost? चलो देखते हैं कि if you're working in Germany with a 50,000 euro salary package annually, तो आपको महीने के 2,700 euros मिलते हैं monthly net.
50,000 euros annually. That's not this net salary, that is before deduction of tax. तो अगर टैक्स वैक्स काट के देखा जाए तो मंथली सैलरी जो होती है वो आपको 2700 अप्रॉक्सीमेटली मिलेगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स. एंड इसमें इफ़ यू आर लिविंग इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट तो 1000 यूरो मान लेते हैं कम से कम भी अगर आप पे कर रहे हो तो 1200 यूरो. 1000 यूरो माना तो 1700 बच गए आपके, राइट. अब इस 1700 यूरो में से 200 यूरो निकाल देते हैं विच माइट इंक्लूड ईटिंग आउटसाइड, बाइंग ग्रोसरीज, यू नो, स्पेंड. आई थिंक सिर्फ ईटिंग का ही रखते हैं. देखो ये सब चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती है ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो हर किसी का स्पेंड करने का तरीका अलग होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ दैन मोस्टली आई कुक एट होम बिकॉज आई लाइक टू हैव होम कुक्ड मील्स. डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ हाउ इज़ योर लाइफ स्टाइल. बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं ये. बट मैं अगर 1000 यूरो रेंट का मान के चलूँ और 200 यूरोज़ खाने पीने का मानूँ तो 1200 यूरो ये हो गया. तो 2700 माइनस 1200 यूरोज़ इज़ 1500 यूरोज़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली योर सेविंग्स पर मंथ विच इज़ 1,20,000 अप्रॉक्सीमेटली महीने का आप सेव कर लोगे अगर आप इतनी सैलरी, विच इज़ ऑल्सो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड अमाउंट. टेकिंग ऑल दोज ट्रिप्स एंड वेकेशंस इनटू कंसिडरेशन, आई एम टेकिंग अ बेसिक खर्चा इनटू कंसिडरेशन और उसका ये है कैलकुलेशन कि 1500 यूरो पर महीने आपका अप्रॉक्सीमेटली सेव हो जाएगा. तो नाउ अगर आप फ्रेशर हो और आप कम्प्लीटली लॉस्ट हो कि आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, तो यू शुड गो टू सैलरी प्लानर्स जो कैलकुलेटर्स होते हैं ऑनलाइन. आई नो दिस वेरी गुड वेबसाइट विच इज़ स्टेपस्टोन सैलरी प्लानर विच इज़ वेरी गुड बिकॉज उसमें यू कैन पुट द सिटी, यू कैन पुट द रोल दैट you have applied for, you can put your experience and everything, and it will give you an approximate amount of the amount of salary that is an average in your industry. You can also see Glassdoor salaries, but I think that they are again very I did not find it very relevant, but for me the Stepstone salary planner was very apt when I was searching for a job and eventually even when I got a job. तो मुझे ऐसा लगा कि Stepstone salary planner was a very good website. Now there's another website that I very much like is the Brutto Netto Rechner. आपकी जो ब्रूटो सैलरी है, जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो सैलरी बिफोर डिडक्शंस ऑफ टैक्स है, वो टैक्स के बाद आपको मंथली कितना नेट मिलेगा. तो इससे आप वो कैलकुलेट कर सकते हो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी सैलरी में आप खुश हो मंथली आपको मिले, उसमें आपका अच्छा खासा चल जाए. तो यू कैन कैलकुलेट दैट एंड यू कैन नेगोशिएट विद द कंपनी कि मुझे इतना अप्रॉक्सीमेटली चाहिए. क्योंकि डोंट डू अ डायरेक्ट करेंसी कन्वर्जन, take other factors into consideration. Same, देखो mostly I know 90% of the people are moving from India to Germany because obviously आपको पे ज़्यादा मिलती है. बट अगर आपको पे ज़्यादा नहीं मिल रही है, इक्विवेलेंट मिल रही है, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो परचेजिंग पावर पैरिटी और आपकी इक्विवेलेंट पे है, तब इट मेक्स सेंस टू स्टे विथ होम, राइट. दैट्स व्हाट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, यू नो, बिकॉज मोस्ट लोगों को जो मैं जानती हूँ और मेरे सिमिलर केस में यही है कि हम अपने घर से दूर तभी जाते हैं जब हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वरना घर छोड़ के जाने का मन तो किसी का भी नहीं होता है. तो दिस इज़ वन वेरी बिग फैक्टर विच यू शुड वे. बट स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी दिस. स्टार्टिंग पॉइंट शुड नॉट बी कि बस सैलरीज़ देखी और सोचा कि वहाँ सैलरी ज़्यादा है जर्मनी में और इंडिया में कम है. ऐसा नहीं है. कैलकुलेट द परचेजिंग पावर पैरिटी बिकॉज यहाँ पे जो रेंट का कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली हाई है. आधे से ज़्यादा पैसे टैक्स में तो कट ही जाते हैं, वो तो खैर इंडिया में भी कटते ही हैं, लेकिन नेट भी आपको मिलने के बाद आपका अगर रेंट बहुत हाई है, अगर आपको सस्ता घर नहीं मिलता है, आजकल हाउसिंग का भी काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, तो दिस कुड बी अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक एंड इट कुड अफेक्ट योर सेविंग्स. That is mainly everything that I wanted to cover in today's video. I hope I didn't forget anything, and if there is something that you would like to add based on your own personal experience, or if you have questions, do not forget to write them down in the comments and I will try to answer them. I would be very, very happy to also read your comments or experiences if you have some. Thank you so much for watching. If you like this video informative, do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I will see you in my next video. Bye and take care.